हर चीज वैसे ही होती है जैसे वो चाहता है। Excuse me, sir. Yo, you're right. Oh, sorry. I know it's a bit out of the blue. Basically, we're just going around teaching people a bit about our language, Hindi. Would you mind if we just taught you a few words to say that you could say to our Indian audience back at home? Is that cool? Yeah? Yeah. Alright, ready? Okay. So this means I'm very glad to meet you. Yeah. Okay. मैं मैं उल्लू उल्लू का का पठा पटा पट्टा पटा ooh. Ooh. Alright, now say it all together. मैं आलू का पटा Yeah. Amazing, Sick. man. You got Sick. it. Hey, yo, please. Wait. Say it for the camera. मैं आलू का पटा So good. Hey, please, I beg, put a heart in the chat, drop some thumbs up. Yo, shout some respect to this guy. Hey, let's get some food. Yeah, the last guy was okay, but I think we just need something better for the next But look at Army man. He's wearing his coat like Takuri Shole. Hey yo, sir, excuse me. Sir, You right? mind if we ask you some questions? Welcome Southall, by the way. It's very Indian, isn't it? It is very Indian, yes. We're actually filming something for our social media channel. I see. We have a huge Indian audience, and we're trying to teach people our language, Hindi. Do you mind saying a couple lines to the camera? I don't mind, yeah, it's all right. Yeah. Sick. Ready? Sick. Alright. This means, hello Indian viewers, it's great to meet you all. मैं बिना मैं बिना Yeah. हाथ वाला हाथ वाला Heart with a bit more the H. The heart. हाथ वाला ठाकुर हूँ ठाकुर हूँ मैं अपना मैं अपना पीछा वाला पीछा वाला कैसे पहुँचूं? कैसे पहुँचूं? That's it. Really good. Yo. Alright. Okay. Right. Could you do it for us? Just directly to the camera, just the whole thing. All the way through. Yeah? Yeah, all the way through. Can up you for it? give me the first half and then the second half too? Okay. Help me. मैं बिना हाथ वाला ठाकुर हूँ मैं बिना हाथ वाला ठाकुर हूँ Sick. मैं अपना पीछा वाला कैसे पहुँचूं? Oh, that for me, would you? मैं अपना पीछा वाला कैसे पहुँचूं? Yo, hey. That was amazing. Yo, hearts in the chat now. That is sick. Really Was it? It's better than this rubbish. Come on, man. Sick. I'm not that. I'm not that. लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि मेरे दो हाथ हैं और मैं ठाकुर नहीं।
गब्बर तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली का जब लोग पूछते हैं क्यों मुझे इस देश से प्यार है जहां मैंने कभी नहीं गया, इसका जवाब मैं खुद नहीं जानता, मगर मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। एक दिन हाँ शमी बोल। Charlie bhai, listen. Come to my restaurant tomorrow. I've employed a new waiter. बहुत अच्छा बंदा है मगर a bit cocky है यार. हाँ तो क्या? I want to play a prank on him bhai and bring your camera. Can I take your order, sir? A mug korma without the mug, vegetarian, and a plain naan, and I think that will be all. You want Thank to you order very a chicken korma without chicken, sir? Yes, because my friend had a mug korma and there were vegetables in the sauce, and I tasted it and it was absolutely yummy. So, on the same thing, but if you just leave out the mug, then But that sir, would- why don't you order the mixed vegetable curry instead? Ah, but that's not the same. You don't have the korma in the mixed vegetable curry. But I don't think the chef can do this, sir. I'm sure the chef can do it. Ask the chef. I'll ask the chef, sir. Yes. This is 300 people, okay? It's very important. We need to get this contract, okay? It's gonna be tough, man. It's not tough. Listen, you are a tough guy and you can do it. We can't let them down. It's very Sir? important. Yeah. Hello, sir. Hello. क्या तकलीफ है इसे? गोरे को चिकन कोरमा चाहिए चिकन के बगैर बेवकूफ़ है। अरे इसे भिंडी की सब्जी दे दो। ऑफर की है फिर भी कह रहा है चिकन चाहिए कोरमा के। जो ये मांग रहा है दे दो साले को। ठीक है। सर जस्ट 2 minutes। Splendid. शेफ से बात करता हूँ। Yes, sir, we can do it. My dear waiter, that is absolutely splendid. Yes. Oh, wait. Huh? There is just one thing, though. आपने मुझे गोरा कहा कि मैंने आपको ब्राउनी कहा। इसमें रंग को बीच में लाने की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं साहब। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राहक या सज्जन भी तो कह सकते थे। फिर आप मुझे गोरा बनाते हैं। गांधी जी मेरे आदर्श। मैं अपने पूरा जीवन रंग-भेद और जातिवाद के खिलाफ दे दिया और इतने सालों के बाद हम वही के वही हैं। ऐसी बातों पर उनकी सिर्फ शर्म से झुक क्या होगा? हमें शर्म आनी चाहिए। इससे गलती होगी है। वेटर जी टेंशन मत ले वेटर जी, मैं सिर्फ मस्ती कर रहा था। रिलैक्स यार, मैं सिर्फ अपनी टांग खींच रहा था। घबराओ मत करो, फिक्र मत करो मेरे भाई। देखो
camera देखो बिंदा से रहने का और मुझे माफ कर दो वेदर जी खाना ला लीजिए हाँ सुनो जब मैं अगले रेस्टोरेंट में जाऊंगा वो होगा आपका मुझे मेरे दोस्त शमी का रेस्टोरेंट में समय बिताना पसंद है और अचानक एक दिन मैंने दो लोगों के बीच दिलचस्प बातचीत सुनी है It's ridiculous. 1 whole year. If you go to India for a year, that means we're done. No, Rajesh. Please come with me. I must go. What's the point in spending a year over there? Because it's my culture, Rajesh. It's my blood. And yours. No, that's the same rubbish I've always had from my grandparents, okay? I'm sick of hearing it, Simran. But your roots are in India, Rajesh. Please just come with me. I love you, Rajesh. But if I have to go alone, then I will. Then we're as good as over. As easy as that? Simran. Do I know you? I couldn't help overhearing. Your girlfriend wants you to get back in touch with your Indian culture. And the language? Hindi? You don't speak it, Well, I can understand it if I hear it, but I can't speak it. but your girlfriend wants you to learn it. No, it's a fantasy. You can only learn it while growing up. No, you can learn it now. No, listen. You don't understand. It's not a European language. You can't just suddenly learn it like some sort of magic trick. Once you're a certain age, it's too late. Iska waran Charlie. It's never too late. وانفر انا يا بيا سيتعي آدم في عنها. حيه شحشح. حيه ريب ما تشره. حيه خير يا برواها. نينك المخلعها صرت قال معها لقد أن يوروبيان أهين لما برن كروها مساسة. ورونتي نين مو اسبدلي كره Charlie says a man can change. وحدي قمك دافن It's not too late. وحولبة وصرت قال وحي وبحنت هيتا تعال Anything is possible. All it takes is hard work. You should learn that and recite it as a mantra. وحولبة وصرت قال وحي وبحنت هيتا تعال مقعة Charlie says, what's your name? Rajesh. Rajesh and Simran. وسيدة راج إيو سمرن دي دي جاي فيلم وروتا دي دي جاي مهدي لقى كركنا دولي سجا كركنا लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना शाबा Ay, ay, ay. शाबा Ay, ay, ay. शाबा Ay, ay, ay. शाबा मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Oh come on
DDLJ? What's DDLJ? وادي منقارته لكن وانولاته. I know someone who can help you. Charlie bhai, you learning Hindi again? It's Raj. Are you serious about that kid? And you think you can teach him? Mere bhai, I have to. And he has potential. He can do it. अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं. Charlie, do you think I can do this? बिल्कुल Maria. अब तैयार है. Yes, I spoke to Marcy. Yeah, she's so excited about me coming there. Yes, yes. I'll be leaving in 3 months. भाई वो 3 महीनों में जा रही है. Max, the food was too spicy. This is an Indian restaurant. Well, it's the Mohons, they can't take all that spice. Come on, man. You have to be very, very careful, okay? How many times do I have to keep telling you this? It's like every week. रवि भाई ने भी सुना कि वो 3 महीने में जा रही है. इससे मुझे और राजेश को ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा. आप उसको मना की थोड़ी देर, थोड़ा सा रुक जाइए. Okay, it's more expensive to go to India in the summer because... I got it because it's Raksha Bandhan. Yes, very busy. Flights more expensive. Hotels overcharging and their eyes because they... she can't go to India because she has to go. It's Ganesh Chaturthi. Wait, she. Ramadan. Madam, would you like to order anything else? No, I'm fine, thank you. Madam ji, I'm sorry, I couldn't help overhearing that you are planning to go to India. Yes, that's right. I'm going to Mumbai. Oh, how lovely. Next year? No, in July. In July? But madam, that is the height of the monsoon season. It is impossible to travel to India. No, that can't be the case. India's a modern country. No, madam. India monsoon is very severe. The roads turn to mud. No, I went to India when I was a child. I don't remember the monsoon causing any flights to be cancelled. How could the monsoon be any different now? Global warming, madam. Oh, yes, of course, global warming. Yes, that's it. Global warming. Very inconvenient. I recommend you wait till after monsoon, madam. Let me look on Google now. No, madam. You won't find the truth there. Oh my God. Yes, trust me, madam. Wait. Why did you call me here? I have something very important to tell you, Simran. मैं एक लंबे से सफ़र से आ रहा हूँ
और मैं समझ रहा था कि बदलने के लिए कोई वक्त नहीं है, पर मैं गलत था और मैं बदल गया हूँ। मुझे मेरा संस्कृति मिल गया है सिमरन, और मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाना चाहता हूँ। Are you serious, Rajesh? एक गोरे के साथ मुलाकात हुई थी, एकदम पागल जुनून आदमी। मुझे बता रहा था कि उसके साथ उसकी जिंदगी में कुछ हुआ था। Let's go to India, Simran. Let's go as soon as we can. As soon as the monsoon is over. It's too dangerous to go now. Who told you that? Trust me, darling. هذا الشيء كذا ديدي الجاي बड़े बड़े देशों में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरी अरमान, फिर भी काम निकले। Amazing quotation by Gandhi. There is so many hopes, so many desires. Every time you touch upon those, you feel a little bit of pain. History Department. Hello, could I make an appointment to see Professor Khan, please? There you are. Professor Khan. Charles. So, Professor Khan, you have released a series of videos promoting the Urdu language, and you want to encourage British Asians to learn literary Urdu and enjoy Urdu poetry. But why Urdu? Because Urdu is a sophisticated poetic language. There's nothing quite like it. It is respectful, it is melodic, and at times it's also referred to as a sweet language. And you've compiled a book of your favorite poems? Yes, and I want to read you a short poem which we call ghazal. You see, Urdu poets write Urdu in the literary sense. Nowadays, people speak a lazy, colloquial form of Urdu, so I want to inspire. You can read classical Arabic. Yes, I've taught myself. Well, in that case, I don't think it'll be that difficult for you to read Urdu. ये दौलत भी लैला हिलो मत। प्रोफेसर साहब किताबें लाने के बगैर भी मुश्किल उर्दू पढ़ना। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चिन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो। दो ये सिर्फ आसान लफ्ज़ है। बचपन का सावन। हाँ जी प्रोफेसर साहब, मैंने खुद ही अपने आप को उर्दू पढ़ाए हैं। आपकी ज़बान, आपकी मीठी ज़बान, शीरी ज़बान, मैं भी उर्दू से वाकिफ़ हूँ।
और मुझे भी बचपन याद है। मुझे इंडिया में गुजारा हुआ बचपन याद आता है। मुझे लोगों की याद सताती है। वो मौसीकी आज भी मेरे कानों में रस खोलती है। वो खाने, उनकी मजेदार, उनकी लज्जत आज भी मुझे याद है। वो लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने है। लेकिन मैं वहां कब नहीं गया प्रोफेसर साहब। मैं कभी किसी भी जनूब एशियाई मुल्क में नहीं गया। ये खुदा की मेहरबानी है आप पे। हर चीज वैसे ही होती है जैसे वो चाहता है। ये अचानक नहीं हुआ। उसने ये यादें किसी मकसद के लिए दिए हैं। हो सकता है कि वो इस्लाम और हिंदुइज्म का ताल्लुक सामने लाने चाहता हो। मेरे भाइयों, मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी वजह, कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो कह रहे थे कि मैं आपको बताऊं, कम से कम कोई चीज आपको बताने, नहीं तो ये फिल्म लोगों को कि मैं कोशिश कर रहा हूं प्रेरित करने, समझ नहीं आएगी। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था कि आप गलत रास्ते पे चले गए थे और फिर दुरुस्त सिमत मिल गई? क्या आपने कुछ गलत किया था और अब सब कुछ सही करना चाहते हो? क्या इसलिए आप मेरे पास आए? ये खुदा की मेहरबानी है आप पर। बताइए। It was मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसी पेश आ गई। न्यूरोसर्जन ने कहा कि मुझे अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए और मेरे तस्वुर में जो यादें आते हैं वो हकीकी नहीं है और वो मेरे जहन की तकलीफ है जो इसने ट्रॉमा के नतीजे में पैदा कर ली है। उसने कहा कि मेरे जहन में इंडिया के टीवी प्रोग्रामों और फिल्मों की तस्वीरों को तस्वीर में बदल दिया है।
उसने कहा कि मेरे दिमाग का एक हिस्सा इस फहमे में था कि मेरी मौत हो गई थी। इस वजह से मेरी असली यादें फिल्म की तस्वीर से तब्दील हो गई थी। उसने कहा कि क्योंकि इसका असर मुझ पर गालिब हो क्या था। मुझे उनके मुतअल्लिक़ फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने फिक्र करना छोड़ दी और उर्दू और दीगर भारतीय ज़बानें सीखना शुरू कर दी। मैं किताबों पर किताबें खरीदता चला गया। मैं जद्दोजहद से काम लिया। जो भी किताब मुझे मिलती मैं इसको पढ़ता। मैंने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़ी है। उर्दू मेरी लैला बन गई। मैं उसका मजनू बन गया। मैं अपनी सरमाजी सरगमियां खत्म कर दी। मैं पढ़ता रहा और पढ़ता रहा, तन्हा, हर दिन, हर रात और एक लंबे अरसे तक। सुदर्शन फाकिर ने उस गजल लिखी, बचपन का सावन, मेरे बचपन। बिस्मिल्लाह, इससे वाह ज्यादा है प्रोफेसर साहब। एक आदमी बच सकता है। सर झुका के तुझसे मांगे रैन को कर दे सहर, संवर जाए दीनो मान जो हो करम तेरी नजर। रूठ ना मौला मेरे, तू ही मेरा हम सफर। रहनुमा ना हो तो कैसे ये कटेगी रह गुजर। कर करम कर दे करम या मौला मेरे मेहरम, तोड़ना दिल। I'm happy you went to see the professor. So am I. Charlie Bhai, I wanted to ask you something. There used to be an old customer who used to come to the restaurant. Lovely lady, Sharmila. Just like her name. A beautiful soul. Sadly, she now lives in a hospice. I was wondering if at some point you could go and meet her. She could really do with some company and she'll be very happy to meet you. My pleasure, bhai. I'll go and visit her. Thank you, Charlie. Mrs. Dallas,
thank you for agreeing to meet me here. Shami talks about you a lot. And by the way, this is a great hospice. But there is just one thing, though. It's not very Indian, is it? No. No, it's not very Indian at all. But these are modern times. This was not part of our tradition. I grew up in a joint family. But times have changed now, haven't they? Young people have such busy lives. But I'm happy here. And everyone loves listening to you sing Bollywood songs. Is that true? Well, back then, I briefly tried playback singing. Really? You didn't pursue that? Well, my husband had an opportunity to come to England. Singing was not a means to earn a living anyway, was it? So we moved here. And we worked very hard. Early morning till late night. Every hour that God sent us. And then my daughter Sujata was born. My son was born. The singing was only left for something for my children. So you sacrificed your career for the sake of your family? Now that is Indian. I miss my husband. He was well respected. We did things together. Most things. My children were growing up and we used to take them out. And all of us had such a good time together. Then the kids grew up, developed their wings, and flew away. And I am left here. But my husband and I, we just fed off each other, you see. We were so together. But now I'm all alone. And it's suffocating. Well, I don't know you, Sharmila ji, but perhaps what you lack is intellectual challenge. Exactly. Yes, I miss that. Well, Sharmila ji, the staff have told me that I should ask you to sing to me. Would you? I could try. They say your voice is melodic. Well, I'll be the judge of that. Do you have a favorite song? Yes, I do actually. It's an old one. It's called Chalte Chalte. Kya film Baki sa Rajkumar ji ke kya kehne? What's that Rajkumar dialogue when he's reading from Ghalib? How does he go? बदल का फकीरों का हम भैसे गाले तमाशाए अहले करम देखते हैं शर्मिला जी आप जानते हैं कि मैं सितार बजा सकता हूँ सितार हिंदुस्तानी सितार क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ और अपने सितार पे एक धुन सुनाऊंगा जरूर
Gucci, bro. عادي بس زيتون. بس زيتون? Would you like olives on your Yeezys? زيتون والله. اهقل. انت اهقل. بس انت علي تبي مايكل انجلو في البورش ها؟ Van Gogh, Starry Night, bro. بابا was best. قال إن زقاقين تايور كان من ممكن أن تكون أحسن. It's art. There's a difference. No point talking to you. Where you from? Saudi Arabia. I think Bollywood films are very popular in your country. Yeah, we love Bollywood. Shah Rukh Khan, Kareena, Priyanka Chopra, Salman Khan. And I think you have a lot of Indians working in Saudi Arabia in the construction industry, don't you? الحمير. فوق وتحت البنايات. Yes, we do. I expect you learn a bit of Hindi from them. تتذكر السواق. ودائما كرع بالسيارة وريحة فمكاري. حقتنا ريحتها مطعم هندي. It is a pleasure. You must have a lot of Indian friends. مسكين يحسب إحنا نصاحب الأعمال. ليش أي شخص يصاحبهم؟ Yes, we do. تعتق على أخواني ولما تحتاج بعلاج طبي راح تعتمد على أحدث العلوم الطبية اللي طوروها الهنود. عندنا أكبر ديمقراطية في العالم وعندنا ثالث أكبر برنامج فضاء في العالم وعندنا ثالث أكبر جيش في العالم. قريبة حتى السيارة سوقنا. هنا المستقبل. كان عندك مربية لما كان صغير؟ مو بس اهتمت فيني كمان رابطني. وش درجة؟ من الهند. الهند. الهند؟ كنت تعرف الهند؟ وين انت؟ كانت زي أمي. والله مشتاق لها مرة. أنت بتتكلم في اللهجة السعودية. ما عمري شفت شخص أوروبي بيتكلم عربي. كم عشت في السعودية؟ ما زرت أي دولة في الشرق الأوسط. علمت نفسي لهجات مختلفة. ما عمري شفت شخص زيك من قبل. انت علمت اللهجة الأم حقتنا. ما عمري شفت شخص أجنبي يتكلم زي كده. انت وعريتني الاحترام. أنا ما أتكلم على العربية الفصحى. العربية عشان تكون politically correct. ما تلاقى أنت. عمري ما راح أكون politically correct.
You're very quiet sitting over there, listening into this conversation. What's your dialect then? Where are you from? أنا مصري من الجنوب. من الجنوب. صعيدي. أنت زرت مصر؟ لا. أتكلم اللغة العربية جيد. شكرا. أقدر مصريين كوميديانات من الصعيد. استنى دقيقة. وشك بيفكرني بباسم يوسف. ايوه باسم. كثير من البشر يقولون نفس الشيء. أنا بحبه. ايوه هو مضحك. ايوه. What are the dialects do we have here? Yusuf, where are you from? Algeria. صحاحية. واش لك صباح؟ والله لبس وانت كشديد. غير هو حبيبي غير هو. وش راك داير فيها؟ راني كوستو. ما زرت مربيتك. كنت خالد. حتى أنا قد سويت غلط. وأنا نادم. لكن الشخص يقدر يتغير. باقي الوقت ما تأكل. راح أزورها. بنروح لها. What car do you drive? Ferrari. Officer. Sorry, it is too late now. Ibn al-Haram. I buy 2 tickets and you're giving me fine? It's okay, we pay for it. सर जी उसको छोड़ दीजिए सर जी. ये शरीफ आदमी है. यहाँ पे हर कोई शरीफ. You speak Hindi? हाँ जी सर, मुझे हिंदी आती है. सर जी उसको छोड़ दीजिए. Sorry. सर जी भगवान राम ने भी रावण को एक मौका दिया था. वैसा ही इससे एक और मौका दीजिए सर जी. आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर जी मुझे जिंदगी ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को एक और मौका दें. सर जी धन्यवाद धन्यवाद. मेरे भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. I can give you a ride if you like. प्यारी 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 Charlie boy! प्यारी 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 तेरी आंखें प्यारी प्यारी करती तुझसे बातें. Habibida, I can make Alam for you, no Elon in love. Habibida, Habibida, I can make Alam for you, no Elon in love. Habibida. प्यारी 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 तेरी आंखें प्यारी प्यारी करती दिल से बातें. Habibida,
ممكن فضلي ذفك علي بس حبيبي ده तेरी नजर के मैं गुलाब तेरा राव तेरा मकान प्यारी प्यारी ओवे माही 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 अखिए तेरी इश्कां दी तिजोरी इश्कां दी तिजोरी I've heard a lot of stories about your priest. Yes, he's highly respected. Guruji is divine. He has special powers. He has saved many people. From what? From themselves. Charlie. Namaste. Namaste. So, Panditji, you've written a book, The Goddess, which is about the river Ganges. Now, I understand the theology of Hinduism, and I know the story about the creation of Mother Ganga and how she is said to be able to cleanse people of their sins. But ultimately, it's a river. There is theology, but in practical terms, how can immersing oneself in a river actually cleanse one of one's sins? You wouldn't know unless you had been there. You haven't been there, have you? No. No, I haven't even been to India, actually. I sense that. I also sense some other things about you, Charlie. Tell me, why do you want to interview me? Well, because of the subject that you write about, and because of your reputation. You see, I'm making a film to inspire Indians. You speak Hindi, don't you? Yes. That's wonderful. But why do you want to inspire Indians? Well, because I'm able to reach British Indians in a particular way, because I can show them that I have no connection to India. And so, if I can learn these languages, then it can't be too difficult for them to learn them. But why? Well, because I'm able to show them that I have no ulterior motive. I have no advantage. There's no connection between me and Asia. That's not the answer to my question, Charlie. Well, as I say, it's because I'm able to show them that if I can do it, they can do it. Charlie, मुझे सच बताओ, आप क्या छुपा रहे हो? Well, perhaps I can come back another time, Panditji, but I'm here really just to interview about your book. No. That's what you think you are here for. Your destiny is already decided by God. Panditji, maybe I can come back at another time, but
here really just to interview you about your book. I sense some heaviness in your heart, Charlie. Is there a secret you want to share? Panditji, I think I should go, but thank you very much. Charlie, you've been waiting to find the right person to guide you. That's why you are here. Release the tension. Guruji, it's a really long story. I can't possibly tell you. It's too long. Some other time I have to come back. This is your destiny. Time is irrelevant. Maybe that is why I came to interview you. It wasn't about your book, it was about my story. I was in it. There was a particular. I was in a particular place. Guruji, I was मैं हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन मेज पर, जनरल एनेस्थेटिक के प्रभाव में। ये पहली बार था जब कभी मैंने सर्जरी करवाई थी। ऑपरेशन से पहले उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो ऑपरेशन करने में देर कराएं, इसीलिए मैंने झूठ बोला था और अब गड़बड़ हुई। मेडिकल स्टाफ जूझ रहे थे मुझे बचाने के लिए। मेरी गलती थी। मैंने मौत का खींचा महसूस किया। शांति लग रही थी। ऐसा लगा कि मैं फिसलता चला जा रहा था। तब मैंने कुछ देखा। वो कितना मुझे मालूम नहीं मैं आपको कैसे बयां करूं। न्यूरोसर्जन ने कहा कि वो एक मृत तृष्णा थी। वो एक तरह की भावर थी, जैसे कि घूमती हुई सुरंग। न्यूरोसर्जन ने कहा कि वो मेरा दिमाग के द्वारा निर्मित मेरी तृष्णा थी, जिसका कारण मेरे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना था। तब मुझे भावर के अंदर खींच लिया गया और तब रोशनी थी। ठीक हो गया। मैंने हॉस्पिटल छोड़ा और उस घटना ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मेरा चरित्र, मेरे संस्कार, मेरी शख्सियत पूर्णतः बदल दिया। मेरा छोटा मन, मेरी तंग नजर, मेरे संकीर्ण विचार खुल गए। मेरे दिल के बंद दरवाजे खुल गए और यादें मुझे वापस आने लगी। मेरे बचपन की यादें, मेरे बचपन हिंदुस्तान में।
अपनी और सचिन ने कहा कि वो मेरा वहम है। वैकल्पिक रूप से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है या मैं सोचता हूँ। वही महत्वपूर्ण है जो मैं अब करता हूँ। मेरे गुस्ताफ जिन्होंने मुझ पर ऑपरेट किया था, मैंने उनसे मिला और मैंने उनको धन्यवाद दिया। वो भावुक पल था। वो सोच रहे थे कि मैं उन पर मुकदमा करूं। मुकदमा की जरूरत नहीं। उस ऑपरेशन के दौरान ऐसा हुआ कि असल में ऑपरेशन मेज पर मैं मर गया था। तब मुझे लक्ष्य दिया और मुझे वापस भेज गया उससे प्राप्त करने के लिए। मुझे मालूम नहीं क्यों मेरे शरीर में एनेस्थेटिक की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी हुई, और मुझे मालूम है कि मैं क्यों जिंदा हूं। मुझे जिंदगी एक और मौका दिया, मुझे एक और जीवन मिला था। मुझे बिछा लिया, मुझे बिछा लिया गया है और मैं इसीलिए हमारी ज़बान है अपने आप सीखा हूँ। मेरी कोशिश है लोगों को प्रेरित करने के लिए और उनको दिखाना कि हम सभी के लिए आशा है, उम्मीद है। मुझे देखें, मैं ये तो संभव लोगों से मिलूंगा। ये है मेरा लक्ष्य, मेरे उद्देश्य, मेरा मकसद। और अपने शेष जीवन के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा भारतीय मूल के लोगों को प्रेरित करने के लिए और अपने लक्ष्य के लिए। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।
This is your destiny. Ganga awaits you. जो भी किया हो जीवन में मेरा हर वो पाप भुला दे, भूल हुई जो परमेश्वर फिर से सच की राह दिखा दे, मन मंदिर में जोत जला दे, मुझको एको मुझसे मिला दे, मुझको क्षमा कर दे, मुझको क्षमा कर दे, मुझ पे दया कर दे, मुझको क्षमा कर दे।